Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. It's the most important news and editorial of the day that is relevant for your prelims and mains examination perspective will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 16th of May. The first news is Center relaxes quality norms for wheat procurement. Second, tie-up between India and foreign universities. Third, PM to launch Buddhist Center work. Prime Minister is on a visit to Nepal. Fourth, Finland bid to join NATO. We'll see why Finland is inclined towards joining NATO. Not only Finland, Denmark is also inclined to join the NATO forces or NATO grouping actually. And the last is an editorial, the road to safety. We'll see the consequences of the improper road safety and what need to be done. Apart from this, the news and editorial discussion, there will be MCQ based questions. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And before that, if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And before I proceed with the session, just to tell you about the prelim test series for 2023. Those of you who are looking forward for the upcoming prelims examination can join this. मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से ले सकते हैं. And these are the detail of the bifurcation of the test. For more details, refer to the description section down below and you can register for this prelims test series. The first news of the day, that is Center relaxes quality norms for wheat procurement, something important for General Studies paper 3, that is issues related to direct and indirect farm subsidies, PDS के जो objectives हैं, limitations हैं, buffer stocks की जो बातें हैं उस पर. Even this is important for General Studies paper 2 and government intervention related issues. So let's understand what government has recently relaxed. So recently, the center has announced a major relaxation on the fair and average quality norms for wheat by raising the maximum permissible limits of shrivelled and broken grain to 18%. पहले ये क्या numbers थी? पहले ये सिर्फ 6% थी. गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा करके अब 18% कर दिया, right? So this is something which is again very important and significant. In light of that, it will help the farmers to get the real income and even वैसे आइटम्स जिनको वो प्रॉपरली सेल नहीं कर पाते थे वो आइटम्स भी अब सेल होंगे. द सेंटर हैज ऑल्सो रिलैक्स द क्वालिटी नॉर्म्स नोन एज फेयर एंड एवरेज क्वालिटी. सो समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन बोथ. नाउ एम क्या है इस डिसीजन की, व्हाई गवर्नमेंट हैज टेकन सच डिसीजन. So the move is aims to provide relief to the farmer from the state of Punjab, Haryana and the UT of Chandigarh, right? जहाँ पे ongoing रबी मार्केटिंग के सीजन्स के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी फार्मर्स को अपने वीट प्रोक्योरमेंट को लेकर के. सो दिस डिसीजन बाय द गवर्नमेंट विल हेल्प ऑल द स्टेट्स एंड द फार्मर्स टू इवन गेट द इनकम एट राइट channel and even the substantial amount that is essentially required by the procurement would be given to the farmers. This decision will reduce the hardship to the farmer and avoid distress during the sale of the wheat. So this is what has actually happened in due course of time. Previously, they were unable to sell this. Now, after this decision, they would be able to sell it very easily. Now, the decision to extend the procurement follows the request by the state government and keep the process going, right? So definitely in longer run, it will have a positive impact on the farmer also and even to the incomes of the farmer also. Procurement और किसी दूसरे states के बारे में अगर बात करें, according to the Ministry of Consumer Affairs, food and public distribution and procurement of wheat was progressively smoothly in the states of मध्य प्रदेश. कुछ ऐसे states हैं जहाँ पे already procurement काफ़ी smooth रही है. मध्य प्रदेश उसमें एक example है, followed by हरियाणा, then पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, बिहार and Rajasthan. So these states have seen a smooth procurement of the wheats. Now, talking about the other states also, this is the infograph which you can find in the newspaper also. So, Center has revised the closing date for the procurement. 31st में रखी गई है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के लिए. 10th June is for Rajasthan. June 15 is for UP, MP, Gujarat and Himachal Pradesh. June 30th for Uttarakhand, another state, 15 for Bihar, right? Some refractions of FAQ norms की अगर बात करें category wise और maximum permissible limits क्या है. Moisture की जो limit है this is 14%.
Slight damage grain is 4%, other food grain 2%, damaged grain is 2%, and foreign matter is 0.7%. So these are the permissible limits for the FAQ norms. So if it is being asked in prelims examination कि कौन सी categories में सबसे ज़्यादा permissible limits रखी गई हैं, so the correct answer would be moisture. So this can again be important for the prelims examination. Now, current stocks of wheat की अगर बात करें country में, so the country opening stock of wheat is 19 million ton, less than last year, which was around 27.3 million ton. And last year, the government procurement was 43.3 million tons. Or this year, procurement has been about 18 million tons. India has cut its wheat output estimate from 111 million ton to 105 million ton by 5.7% due to prolonged spell of dry weather, and even the shrivelled grain which was produced was actually the reason behind the low data, or you can say the low anticipations. Another news, tie-ups between Indian and foreign universities. So this is important for General Studies Paper 2, issues related to development of management of educations and human resources. So in a major push to collaboration between Indian university and foreign university, the University Grant Commission, which is also known as UGC, they have come up with a decision that they would be having a collaboration with more than 500 universities, foreign universities that are located especially in the United States, United Kingdom, Europe and East Asia. तो 500 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशंस होंगी और इसके एडवांटेजेस डायरेक्ट यहाँ के इंडियन बच्चों को मिलेगी, एंड इवन फ्रॉम द स्टूडेंट फ्रॉम द अब्रॉड वुड आल्सो एबल टू हैव अ ट्रांसफर प्रोग्राम्स. So academic collaborations between Indian and foreign universities in the higher education sector is among the key recommendations of the National Education Policy 2020, which was recently envisaged by the central government. So if you are writing this answer, make sure you connect this कि ये जो provisions हैं वो NEP के जो guideline है उसके accordingly aligned है ये decisions. The collaborations between the Indian and foreign university will also reduce the part of outflow for the foreign exchange, which is about 25 billion US dollar currently. तो जितने लोग इंडिया से पढ़ने जाते हैं कहीं ना कहीं इतनी वैल्यू जो है 25 बिलियन डॉलर की वो फॉरेन करेंसीज में बेसिकली दे आर इन्वेस्टिंग, इंडियन पीपल आर गोइंग अब्रॉड एंड स्टडिंग एंड दिस मच अमाउंट इज बीइंग स्पेंट. Now, लेटेस्ट रेगुलेशंस की अगर बात करें फॉरेन यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशंस में, सो देयर आर सम रेगुलेशंस which I have also discussed in the previous daily news analysis. तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक नई रूल स्टार्ट की, दैट इज academic collaborations between Indian and foreign higher education institutions to offer a joint degree, dual degree and twinning program regulation 2022 that were recently ratified in April 2022. The University Grant Commissions now plan to hold a meeting with the foreign universities in India to discuss the possibilities जहाँ पे टाई अप की जा सके. एक रेगुलेशन जो नोटिफाइड है उसके एडहेरेंस में काम होगी, एंड इवन इट विल कॉल फॉर अ twinning programs, joint degree, dual degree program that would be applicable for this academic year only. इसी academic session से ये collaboration को start करने की बात की गई है, and this will help a lot more students who are pursuing either dual degree, joint degree and even for the twinning programs. Now criteria for collaborations, Government of India ने कुछ specific criteria रखे हैं कि किन criteria को fulfill करने के बाद ही foreign universities collaborate कर पाएंगी. So under the regulation, foreign universities willing to collaborate must rank in top 1000 either in the Times Higher Education or QS ranking. So ये दोनों ranking के बारे में आपको पता होना चाहिए. I have already discussed this previously. You can check out for other further details. The Indian universities made in the same standard would be placed under 100, जो कि इंडिया की NIRF है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसके अकॉर्डिंगली 100 रैंक्स के अंदर होने चाहिए वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करेंगे. So factually, this is an important point for the prelims examination. And even or having a maximum score, minimum score, that is एक minimum score की अगर बात करें तो जो NAC की रैंकिंग मिलती है, जो NAC के नंबर्स मिलते हैं, उसमें कम से कम 3.01 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल की. ये सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करने के लिए. सो दीज क्राइटेरिया आर फॉर द इंडियन यूनिवर्सिटी टू कोलैबोरेट विद द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़. Now, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं और किस किस कंट्रीज में इनरोल हैं, सो दिस विल गिव यू अ बेसिक हैंडसम एक्सपीरियंस अबाउट दिस. यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें, दिस इज द नंबर फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया,
then United Kingdom, Canada, and after that United Arab Emirates. ये top 5 destinations हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पढ़ने जाते हैं. सोर्स कंट्रीज की अगर बात करें, then the other people from Nepal, Afghanistan, Bhutan, Malaysia, and Iraq visit India to get their higher educations. So ये कुछ डेटाज हैं जो आपके लिए relevant होंगे. PM to launch Buddhist center work. This is important for General Studies paper 2, India and its neighborhood relations. So the Prime Minister of India will launch the constructions of Indian Heritage Center for the Buddhist culture and heritage. As we know that the Prime Minister is on a 2-day visit to Nepal. He has visited Lumbini in Nepal. Basically, the place of interest of Lumbini is specifically to mark the celebrations of Buddha Jayanti, which is the reason being the Prime Minister is there. Apart from this, there are many other bilateral issues that would be also discussed during this visit. So significance of Lumbini is again something very important. आपने अपने NCERTs में या फिर जो ऐसे prelims के questions हैं उसके point of view से पढ़ा होगा. Lumbini is a place where Prince Siddhartha marked the born, that is around 623. Prince Siddhartha Gautam is again a Buddha. So he later attained the entitlement at Bodh Gaya and Bihar district, came to be known as the Buddha place. So ये कुछ important significance है जो आपके culture point of view से भी prelims examination में important है. Now International Buddhist Confederation की अगर बात करें, so this will work. The center will be undergoing with the International Buddhist Confederation, which will be a granted body under the Ministry of Culture. And International Buddhist Confederation जो कि headquarter होगी इंडिया में, दिल्ली में. It was formed actually in 2013 as an international Buddhist umbrella body to serve a common platform for the Buddhist worldwide. और इसकी aim क्या है? It's aim to create a platform जहाँ पे various Buddhist organizations अपने worldwide कोशिश ये करेंगे कि उनके जो traditions हैं उनको preserve किया जाए, propagate किया जाए and promote a shared Buddhist value and principle. So the Buddhist Center would be the first net zero emission building in Nepal. तो ये कैसी बिल्डिंग होगी? नेपाल में पहली बिल्डिंग होगी जो नेट जीरो एमिशंस के टारगेट्स को भी फुलफिल करेंगी. अदर डेवलपमेंट्स की अगर बात करें, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन द फाउंडेशन स्टेट प्रोग्राम्स फॉर द इंटरनेशनल सेंटर and offers the prayer at Mahadevi temple that is dedicated to the mother of Buddha. He also delivered the address to Buddha Jayanti event organized by the Lumbini Development Trust of the Nepal government. Now, Finland bid to join NATO, something very important amid the Russia's invasion to Ukraine. These are the alarming situation which called for Finland and Denmark to again advocate for the NATO membership. This is something important for General Studies paper 2, bilateral regional grouping and agreement, evolving India's and affecting India's interest. So recently, Finland की government ने announce किया है that they would be applying for the membership to join the NATO. So their move and will end the decade's strategic non-alignment and pave way for the most significant expansion of the military westward alliance in the EU. Right? Not only Finland, बाकी Denmark भी ऐसे country हैं जिन्हें hint किया है that they can also join the NATO membership. So the decision was announced by the Ministerial Committee of the Foreign and Security Policy, a committee which is chaired by the President of Finland. The tectonic shift की अगर बात करें, ये एक tectonic shift मानी जा रही है जो कि significant ramifications करेगी in the entire European continent. And Russia never wanted the eastward expansion of the NATO. तो देखना होगा क्या इसके repercussions फिनलैंड को भी देखने होंगे. रशिया कुछ प्रोएक्टिवली एक्शंस लेगा बिकॉज ऐसे एंटिसिपेशंस हैं कि रशिया ने अपने फोर्सेस को फिनलैंड के बॉर्डर्स पे डिप्लॉय करनी शुरू की है. दिस इज व्हाट द इंटेलिजेंस रिपोर्ट इज, बट वी एक्चुअली डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो लुकिंग इनटू द मैप, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मैप देखना है. मैप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. So you can see this is a Finland. The entire border that is sharing with Russia is around 1340. ये रशिया है. रशिया के साथ फिनलैंड ऑलमोस्ट 1340 किलोमीटर्स की बॉर्डर शेयर करती है अपॉन इट्स नॉर्थ, राइट, नॉर्थ ऑफ रशिया. एंड दीज आर द अदर कंट्रीज, स्वीडन, राइट. और यहाँ पे कुछ और कंट्रीज़ हैं आपके लिए. बाल्टिक सी जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है. ये पूछा जा सकता है कि बाल्टिक सी कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच में है, फिर कौन से एडजॉइनिंग कंट्रीज़ के बीच में. So make sure if anything there is a news, आपको उसके आसपास की चीज़ों को भी ध्यान रखनी है. Now, area of Russia military
in Ukraine. You can see these are the map which is under the Russia. ये यूक्रेन के कुछ पोर्शन है जो कि अभी रशिया के कंट्रोल में, राइट? बिकॉज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस बिकॉज रिसेंटली जो रशिया ने इन्वेड की है यूक्रेन को, उसके बाद ये चीज़ें और ज़्यादा अलार्मिंग हो गई है दूसरे कंट्रीज के लिए, दैट हाउ नीड टू टेक देयर प्रिकॉशंस. ना फिनलैंड और स्वीडन की अगर बात करें किस तरह से बेसिकली दे हैव द मिलिट्री कैपेबिलिटीज, तो ये कुछ टोटल नंबर्स हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिव ऑफ रिजर्व फोर्सेस. दिस इज फॉर द मेन बैटल टैंक, दिस इज फॉर द कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, आर्म्ड पर्सनल कैरियर और आर्टिलरीज. तो ये दोनों कंट्रीज की टोटल कैपेसिटी को बताया गया है, right? Again, these two countries would be taking all its precaution, and even it would be aided and helped by United States also if they move forward with the expansion in the NATO membership. Now, रशिया की क्या रिस्पॉन्ड रही है फिनलैंड के इस अनाउंसमेंट के बाद? So, Finland formal declaration and Sweden interest to joining the NATO membership has aggravated the Russia's security dilemma. And official voice within Russia that they said that the sense of how they perceive the US role in as an agent provocators trying to lure other countries to join NATO. तो साफ शब्दों में रशिया ने ये टारगेट किया है कि ये यूएस प्रोवोक कर रही है सारी कंट्रीज को और उनको जबरदस्ती कोशिश ये कर रही है कि नाटो की मेंबरशिप दिलवाई जाए. It might be true to some extent, but what is bad in it? Russia cannot be a sole player. अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक सेटअप्स है, we have to democratize the whole world. सिर्फ इंडिया में डेमोक्रेसी या किसी और कंट्री में डेमोक्रेसी से नहीं होगा, हमें पूरे वर्ल्ड को एक डेमोक्रेटिक सेटअप में लाना पड़ेगा. फॉर दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड हैव अ मेंबरशिप, और कोई एक कंट्री एक दूसरे कंट्री को रोक नहीं सकती है कि उससे उसको खतरा, right? Russia cannot have its own prerogative in terms of defining that who should join and who should not join. It is the country who have to decide whether they want the NATO membership or not. तो आपसे मेंस एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितना हद तक ये सही है नाटो मेंबरशिप को ज्वाइन करना, और वो उस पर्टिकुलर नेबरिंग कंट्रीज के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सिक्योरिटी को क्या वाकई में कोई खतरा हो सकता है. ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर सोचें समझें, एंड इवन if it is being asked in examination you can accordingly write it. Now what lies ahead, अगर ये जो context अगर बात करें जिस तरह से फिनलैंड ने अप्लाई किया है मेंबरशिप के लिए, so कैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी. So NATO expansionism has been publicly cited multi times. The Russia's minister and even defense minister have raised concern regarding this. Estonia की अगर बात करें, they have already asked NATO for local anti-Russia command and greater air defense, citing the Baltic security concern. So Baltic Sea regions में भी एक security concern which is ongoing. Now the Russia's invasion to Ukraine will begin almost 3 months back and only result in isolating Russia from most of the countries in the world. जिस तरह से रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, उसके बाद sanctions लगाए गए रशिया पे, यूएस, फ्रांस, these are the country which has heavily sanctioned the Russia. Now Finland, if join NATO, Russia could seek to deploy more forces along the Russia-Finland border. This is what anticipation is. And Finland and Russia share almost 1300 approximately, मैंने 134 के बारे में बात की, approximately 1300 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर शेयर करती है. Now moving to the editorial of the day, the road to safety, again something important for general studies paper 2, the government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from it, design and implementations. So what I'm going to discuss under this editorial, so there are 4 important subheads that I'll be discussing. First is the background, lesson from the trials, approach required, and using the public transport. So the entire editorial focuses upon the road safety in India. So road safety is an issue of universal concern, not only for a country like India, it has become a significance and concern for the entire world. So every year, mega India cities witness nearly 50,000 accident, और इस एक्सीडेंट्स में कई लोगों की स्पॉट डेथ होती है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी सहना होता है. सो नियरली हाफ ऑफ दिस हु लॉस देयर लाइफ आर पेडेस्ट्रियन. ऐसे लोग जो पेडेस्ट्रियन हैं, जो सड़कों पे चलते हैं, सड़कों पे रहते हैं, सड़कों पे सोते हैं, these people are hugely impacted because of this. So almost half of this are avoidable death due to the collisions of bus and trucks. तो ऐसे collisions की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डेथ हो रही है. ऑल्दो इंडिया में रोड सेफ्टी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने बेसिकली अपनी इनिशिएटिव्स ली है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने हाईवे को इतनी अच्छी बनाने की बात की है ताकि रोड एक्सीडेंट्स को भी कम किया जा सके. सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लॉस्ट ह्यूमन लाइफ इज इमेंस.
ना लेसन फ्रॉम ट्रायल्स, अगर बात करें किस तरह से लेशंस लेने की जरूरत है इन केस ऑफ दिल्ली, road death has picked up in 2009. Since then, the government has gradually tapered despite the burgeoning numbers in the vehicles. तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने इनिशिएट किया है जहाँ पे वो ड्राइवर्स को एक ड्राइवर्स लेन डेडिकेट करेंगे. सपोज दिस इज अ रोड, देयर इज अ डेडिकेटेड लेन फॉर द बस विच विल बी गोइंग, right? And the compliance has to be followed. If not followed, they have to pay the fine, right? And this required a reorientation approach by all road users. For India, it is tough because इस तरह के rules पहले हमने कभी follow नहीं किए. तो buses को भी and even for the normal citizen, they have to cooperate in the government decision and they will allow the bus to pass in a single lane. Now, approach required की अगर बात करें, first it would be useful to look into the skill sets of Indian driver. जो इंडिया के ड्राइवर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या फिर गवर्नमेंट के ड्राइवर्स हों, उन सारे को एक हमें बेसिक स्किल सेट्स देने की ज़रूरत है. एंड द लर्नर लाइसेंस issued after the test of the basic understanding of the road signatures and traffic rules are required. तो ये सबसे पहली ज़रूरत होगी कि बेसिक टेस्ट ली जाए ताकि उनको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या ट्रैफिक रूल्स एक्चुअली फॉलो करनी होती है. The gap between the lab environment test and reality leaves much to be desired. Perhaps अगर बात करें एडिशनल सेटअप ऑफ मैंडेटरी स्टिमुलेटर्स की, तो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस भी होती है कई फॉरेन कंट्रीज में, दैट कुड बी एम्बेडेड विद द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सो दैट मेनी ड्राइवर ऑफ हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल शुड एक्चुअली नो द फैक्ट दैट हाउ दे हैव टू ड्राइव. सबसे ज़्यादा जो हाईवे में एक्सीडेंट्स हो रही हैं या फिर नॉर्मल स्टेट्स रोड में भी जो एक्सीडेंट्स होती हैं उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है. दैट हैज़ टू बी ओनली डन वंस द ड्राइवर इज वेल स्किल्ड एंड इक्विप्ड विद द नॉर्म्स. सेकेंड जो है सबसे बड़ी चीज़ है अमेनेबिलिटी को लेकर के, जो रोड के डिज़ाइन है दैट हैज़ टू बी एकोमोडेटिव एंड फेयरली इनफ. बसेस मस्ट स्टिक टू देयर लेन्स एंड स्टॉप एट द डेजिग्नेटेड बस स्टॉप. तो जो डेजिग्नेटेड लेन्स बनाए गए हैं वहीं बस को रुकनी है और जो बस स्टॉप्स होते हैं वहीं उन्हें यूज़ करनी है सो दैट द एक्सीडेंट, द लेस प्रोन एक्सीडेंट इज देयर, राइट? दिस वुड रिक्वायर द फ्री पैसेज ऑफ द बस लेन विच पीपल टेंड टू क्लटर बाय पार्किंग द व्हीकल ऑन द स्ट्रीट. आपने देखा होगा कई ऐसे एरियाज हैं जो बस की स्टैंड होती है वहाँ पे कार पार्क होती है. तो इस तरह की चीज़ें से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंड अगेन इम्पैक्टिंग एंड कॉलिंग फॉर अ लॉट मोर एक्सीडेंट इन दैट एरिया. अ पायलट स्ट्रेच हैज़ बीन रीडिजाइन टू कोलैबोरेट विद द IIT दिल्ली. तो गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशंस भी की हैं IIT दिल्ली के साथ ताकि कुछ कंक्लूसिव एक्शंस लिए जा सके इस रोड मैप को लेकर. Third would be enforcing the traffic discipline. This is something very important. जहाँ पे रोड ओनिंग एजेंसीज जो है मल्टीपल बॉडीज के साथ काम कर सकती है, वेदर इज ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट विंग्स. Similarly, speeding camera installed by traffic police city with an automated number of the plate recognition system saw a spike in the number of challan, slowdown of the vehicle in the city. Now, technology tools are deploying artificial intelligence that would introduce necessary deterrence for any traffic violations. Now, using public transport is something very important. This will call for a fuel saving in a environment which is less pollutant to the more vehicles. जो जितने कम व्हीकल्स होंगी उतने इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस कम होंगे. इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने की भी बात की गई है. एट वन लेवल देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस द मोबिलिटी एंड सर्विस सॉल्यूशन विच इज ऑल्सो नोन एज MAS, which will integrate all option of public mobility on a common digital platform. Commuters के साथ ये ज़रूरत that should choose hop-on services on a metro, cab and auto. So more and more public transport should be promoted, but उसके लिए हमें अपनी quality को उसके accordingly लानी होगी. Everyone will not definitely look for an option for the public transport because of the gathering, because of the amenities that is not provided. तो इस चीज़ों पे भी काम करने की ज़रूरत है. The government-backed digital aggregators on mobility options would make the public transport more efficient, जहाँ पे it will provide for an inbuilt solutions, last mile, first mile connectivity को लेकर. Despite other things like disciplining the traffic routes, and it's a man-month exercise which will call for a collective behavioral change. तो जो ट्रैफिक डिसिप्लिन है वो अपने आप में काफ़ी बड़ी चैलेंज है. उस एक्सरसाइज को पूरे करने के लिए हमें बिहेवियर चेंज की ज़रूरत है फॉर ऑल, not only for drivers, we need the behavioral change for the people who is actually traveling in road. Normal citizen जो है उन्हें भी अपने behavior में change लाना होगा. So if you want to see the change, we have to also incorporate the change that is actually essentially required as by the Gandhi ji. जो changes आप देखना चाहते हैं वो सारे changes को आप अपने ऊपर पहले incorporate करें.
So this is how we can get a possible solution if you're writing in mains paper. This can again be important for the case studies and ethics paper also. Now, moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers for Saturday question. For first question, the correct option is A. For second question, the correct option is B. Today's MCQ for practice, Making Peace with Nature, is recently published by United Nations Environment Programme, Intergovernmental Panel on Climate Change, Food and Agriculture Organization, World Wildlife Fund for Nature. So you have to choose the correct options. Second, vertical launch short range surface to air missile. It is indigenously developed and designed by DRDO. It is capable of neutralizing aerial threats at close range, including the sea skimming targets. So do look out for the correct options. And these are some of the important questions that would be relevant for the upcoming prelims examination. So this was all about for the daily news and editorial analysis, followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.